Good morning, everyone. Good morning, Pankaj, Chandre, Ambram, Mamun. Okay, very good morning. Welcome to RAYACADEMY IAS. आज आम पढ़ा वीकली करंट अफेयर्स लास्ट वीक रो 2nd मार्च रु 8th मार्च. बेसिकली जदि आम देखा तो खाली युद्धर न्यूज ही चली ता छड़ा सेमती किसी स्पेसिफिक न्यूज नहीं. तथापि माने सेमती ऊपर लगुथबो कि सेमती किसी स्पेसिफिक न्यूज नहीं, बट एग्जाम पॉइंट रो किसी भी न्यूज माने आम सिलेबस सहित रिलेट करछि माने सेटा इंपोर्टेंट, राइट. आउ जेहेतु वार चली ईरान इजराइल ये सब युद्ध सब चली जहाँ भी तुम प्रॉब्लम देखुच युद्ध कौन पे होची कौन ने कौन कहार क्षति हम कहार प्रॉफिट हम कौन हम से सब भितर आमको पशेबार वर्तमान पे नहीं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओपीएससी आमको इंटरनेशनल रिलेशंस आमर सिलेबस रे नहीं हैला. बट जेहेतु सेटा न्यूज रे अच्छी तो ईरान माने ईरान और इजराइल रो मैप स्टडी करियाटा इंपोर्टेंट. आउट अच्छे हमरो स्ट्रेट ऑफ गोटे स्ट्रेट अच्छे पढ़िबा से जो लोकेशंस गुड़ाक आम इंपोर्टेंट हो जाए जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो. तो से गुड़ाक आज आम निहाती देखा ता सहित जहाँ भी आम नेशनल न्यूज अच्छी सब आम कवर अप करवा. ओके, गुड मॉर्निंग सबिता. सो डेरी करवानी स्टार्ट करवा. बट स्टार्ट करिया पूर्व जानिथिबो तुम माने कि ओएस रो जो फाउंडेशन बैच अच्छी से तुम एनरोल करिपरिबो. डायरेक्ट तुम प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू सबू माने गोटे सांगरे तुम पूरा फाउंडेशन रो आरंभ करिकी इंटरव्यू पे गोटे ही प्रोग्राम रोची से तुम एनरोल करिपरिबो हैला. तो नुआ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी आ गोटे नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट हबार अच्छी. तो इफ यू वांट टू एनरोल देन तुम एठी जो गिवन नंबर अच्छी किंबा एठी कौन भी नंबर तुम कांटेक्ट करके जॉइन करिपरिबो. ओके, सो एटा हला गोटे इम्पोर्टेंट न्यूज. गवर्नर रो अपॉइंटमेंट हैला. आ गोटे न्यूज तुमने देखिथिबो कि प्रेसिडेंट मुर्मू कोलकाता जाइथिले गोटे सांथल यूनियन रो सांथल कमिटी रो कोन गोटे थिला सेथि पे से कोलकाता जाइथिले. बट सेथि ममता बनर्जी प्रेजेंट नथिले. आउ गवर्नर जेहेतु नुआ अपॉइंट होइछंती वेस्ट बंगाल रे भी से भी प्रेजेंट नथिले हैला. तो सेटा भी गोटे न्यूज हेइची. बट हमको से पॉलिटिक्स भीतर पसिबार नहीं. बट यस सेटा कोन किए ठीक किए भूल हमको से भीतर पसिबार नहीं. हमर मेन इंपोर्टेंट हैला गवर्नर जेहेतु दीटा नुआ गवर्नर माने अपॉइंट होइछंती तमिलनाडु पे आउ वेस्ट बंगाल पे गवर्नर चेंज होइछंती. तो गवर्नर जेहेतु हमर सिलेबस रे अछि सेटा टिके हम निहाती देखिया को पड़िबो. ओके, अच्छा. तो गवर्नर किए माने हु इज ए गवर्नर. गवर्नर किए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट हैला. जेमिति हमर इंडिया रो हेड किए प्रेसिडेंट गोटे पर्टिकुलर स्टेट रो हेड होचंदी गवर्नर, राइट. मेन आर्टिकल जो हमें मन रखिबा आर्टिकल 153. एटा हमको निहाते मन रखा पड़िबो. आर्टिकल नंबर ऑब्वियसली तो मैंने जानथिबो. आर्टिकल 153 डील्स विथ दैट शैल बी ए गवर्नर. गोटे गवर्नर रहिबा कथा. हाउएवर the 7th constitutional amendment 1956 allows for appointment of the same person as governor for 2 or more states. जदि हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे पचारे कि सेम गवर्नर दीटा किंबा अधिक स्टेट पे रही परिबो कि नहीं, then your answer should be yes. There can be same person as governor for 2 or more states. को amendment रे एटा कुहा जाईची 7th constitutional amendment 1956 रे एटा अलाउ कराइची. ओके, तो आर्टिकल 153 कहूची कि प्रति गवर्नर पे गोटे प्रति स्टेट पे गोटे गोटे गवर्नर रहिबा कथा हैला. प्लस 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1956 रे हेथिला से भी कह जाइए कि जदि जड़े गवर्नर दीटा किंबा 3टा स्टेट रो गवर्नर हो पार अपॉइंट करा जाय पारिबो. ओके, आर्टिकल 154 कहूची जे गवर्नर पाखरे तमरो
एग्जीक्यूटिव पावर रोची आर्टिकल 155 कहूची किए अपॉइंट करिवो गवर्नर को ऑब्वियसली वी ऑल नो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर आर्टिकल 156 स्टेट्स गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जेति की टाइम पर्यंत रहिबे हला तांकर पोस्ट रे गवर्नर भी सेति की टाइम पे रहिबे जदि हमें देखिबा टिपिकली 5 वर्ष पर्यंत सेरा थाए ओके आर्टिकल 157 और 158 आउटलाइन द क्वालिफिकेशन कौन रहिबा दरकार गोटे गवर्नर रो कि ऑब्वियसली ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया 35 इयर्स ओल्ड रहिबा कथा आउ जहाँ भी ऑफिस रो कंडीशन माने बाहर कौन सी तरह प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किछि न रहिबा दरकार ओके सो जदि हमको गवर्नर गोटे न्यूज आम देखा पाऊँ देन ये आर्टिकल आम इंपोर्टेंट हो जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव 156 देयर शैल बी ए गवर्नर 153 देयर शैल बी ए गवर्नर 154 एग्जीक्यूटिव पावर होची 155 किए तांको अपॉइंट करूची प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती 156 रोची तांकर टर्म टेन्यूर प्रेसिडेंट सहित समान 157 और 158 रोची तांकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हला क्वालिफिकेशन कोन रहिबा दरकार ओके एंड he or she is the constitutional head of the state acts as a vital link between the central government and the state government जेमिति गोटे इंडिया रो टोटली प्रेसिडेंट ही सब तार माने हायर अथॉरिटी हिसाब रे हम नेउ स्टेट रो भी सेमति जदि हम हायर अथॉरिटी काहा को जदि देखिबा गवर्नर सी होचोने मेन लिंक बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government. While the governor is the executive head, they generally act on the aid and advice of the council of the minister. हला council of the minister मानकर भी ता माने एमति नो कि से माने खाली खालटारे बसचंती से मानकर council of ministry मानकर advice aid under रे ही से चलीबे हला ओके एंड ऑब्वियसली तुम जानि थिबो जदि किसी बिल हमको पास करेबार अछि हला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे देन गवर्नर सेटा पास करंती गवर्नर चाहिले से जिंसटा को से प्रेसिडेंट पाखो भी पठै परिबे कंसीडरेशन पाई एम आई क्लियर ओके अच्छा केमिति गवर्नर को हमें अपॉइंट करू जेतु नुआ दीटा गवर्नर अपॉइंट हे छंती तो सेमन को पाई सेमति किछि डायरेक्ट इलेक्शन हुए कि नो A governor is neither directly nor indirectly elected. Elected तो कभी भी नहीं हो, right? Then कौन होती? They are nominated by the central government, right? Just a second. They are nominated by whom? Central government तंको nominate करे, appoint करंदे president, right? This ensures that the center can maintain a degree of supervision over the state administration. हैला ता माने किए गवर्नर हेई परिबो गोटे पर्टिकुलर स्टेट रो सेटा कहा हाथ रे थाए सेंटर रो हाथ रे ही थाए स्टेट रो हाथ रे न थाए ऑब्वियसली टू मेजर कन्वेंशंस आर यूजुअली फॉलोड सेमति किछि लीगल बाइंडिंग न हो प्रथम हैला द पर्सन शुड बी एन आउटसाइडर हैला माने से पर्टिकुलर स्टेट रो बिलोंग करू नथिबो फॉर एग्जांपल हमरो द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड रो थिले गवर्नर तो ऑब्वियसली से ओडिसा रे थिले बट से झारखंड रो भी हेई परिले बिकॉज़ शी वाज नॉट बिलोंगिंग टू झारखंड ओके प्रेसिडेंट ऑफन कंसल्ट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग हला सेमति कि लीगल बाइंडिंग नुह बट ए दीटा से माने के रहबा कथा नहीं आती What are the functions of the governor मु कहले एग्जीक्यूटिव फंक्शंस तो रहुची हैला जेहेतु से गोटे हेड ऑफ द स्टेट जहां भी एग्जीक्यूटिव एक्शन रहिला हैला गवर्नर अंडर ही से सब जिंस हुए एंड चीफ मिनिस्टर को की अपॉइंट करंती प्राइम मिनिस्टर को की अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को की अपॉइंट करंती गवर्नर हैला जेतबेले स्टेट कथा आसीबो गवर्नर आसीबो बुझलो and on their advice the other ministers हैला बाकी जति भी मिनिस्टर्स अछंती चीफ मिनिस्टर अछंती समस्त को गवर्नर अपॉइंट करंती आउ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी गवर्नर अपॉइंट करंती and the chairman and members of the
स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर एग्जांपल ओडिसा रा हमरो ओपीएससी अछि ओपीएससी रो जो मेंबर्स मानो को एंड ओपीएससी रो चेयरमैन को की अपॉइंट करंती गवर्नर कंफ्यूज होबनी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करंतीनी गवर्नर अपॉइंट करंती स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन को भी आउ बाकी जेति भी तांकर मेंबर्स थांती तांको भी क्लियर they recommend the imposition of constitutional emergency president's rule in a state to the president under article 356 जदि स्टेट रे किछि कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे काम किछि हेलानी देन इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी भी लागि परिबो एज पर आर्टिकल 356 से जिनसटा से प्रेसिडेंट को भी जणांती कि एमती सब ठीक ठाक होनी हमको इमरजेंसी लगेबा को पड़िबो हला जेमते हम रिसेंटली देखिथिलु मणिपुर रो केस ओके अच्छा सेटा हला हमरो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ता बाद भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी रहउची हला कोन द गवर्नर हैज द पावर टू समन और प्रोरोग माने गोटे सेशन टाको से आरंभ करिवे किबा एंड करिवे ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हला किछि भी नया सेशन हबा पूर्वरु से स्टार्ट करिवे आउ एंड भी करिवे क्लियर addressing the legislature they address the state legislature at the commencement of the first session start haba purboru pratham address kahar ruhe governor kor ruhe okay after each general election and at the first session of each year jetobale भी प्रथम सेशन हबो सेही तो स्टार्ट करबे सेही प्रोरोग करि परिबे एंड सेही फर्स्ट स्पीच देबे ओके वीटो पावर भी रहउची बहुत इंपोर्टेंट वीटो पावर माने गोटे डिसीजन को से चाहिले रिवर्स करि परिबे कि चेंज करि परिबे कि विथहोल्ड करि परिबे ई सब दायित्व भी मेन माने मेजर दायित्व तांग पाखरे रहउची व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर जदि स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास हो जाउची गवर्नर कौन करें बारंबार हम पढ़ी बिल को एक्सटेंड दे पारे विथहोल्ड करें आउ रिटर्न करें ये तीन टा जिनस करें प्लस से चाहिए रिजर्व भी करें एंड ताकू प्रेसिडेंट पाखक पठे पारे फॉर रिकनसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन है रिटर्न जिते करेंगे मनी बिल को से रिटर्न करें आउ जे कौन भी नॉर्मल बिल अच्छी ताकू से रिकनसिडरेशन अगेन रिटर्न भी करें एंड चाहिए से प्रेसिडेंट को से पठे भी पारे बिल टा को कंसीडर करिया पे ओके ऑर्डिनेंस पावर ऑर्डिनेंस माने कौन ऑर्डिनेंस माने हला टेम्पररी लॉस तो गवर्नर चाहिए टेम्पररी लॉस बनै पारिबे ओके एंड एटा को आर्टिकल ले लिखा है जी अंडर आर्टिकल 213 दिस इज इंपॉर्टेंट हला दिस इज इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 203 the governor can promulgate ordinances when the state legislature is not in session state legislature जेतबले सेशन रे नथिबो ता माने मोस्ट प्रोबेबली जेतबले इमरजेंसी थिबो हला मोस्ट प्रोबेबली से टाइम रे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी गवर्नर पाखरे अछि ओके जोटा कि चाहिले परे एक्ट रे भी कन्वर्ट हे परिबो ऑर्डिनेंस ता एक्ट रे भी कन्वर्ट हे परिबो ओके एम आई क्लियर दी प्रकार फंक्शंस आम स्टडी कलु गवर्नर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन है परिबो लेजिस्लेटिव फंक्शंस कौन है परिबो ओके देन वी हैव जुडिशियल फंक्शन रे सबुठु बड़ इंपोर्टेंट पावर होची पार्डनिंग पावर माने क्षमा करिवार पावर क्षमा करिवार शक्ति भी अछि जदी जनकू अच्छा जदी जनकू किछि क्राइम पय किछि भूल पय तांको पनिशमेंट मिले छी हला देन सेथरे गवर्नर कर कोन हाथ रही से चाहिले कोन कर परिबे आर्टिकल 161 रे ए जिनसटा लिखा है जत्ते कि भी मो आर्टिकल तुमको कहली नहीं 153 रु नै कि 161 आउ एठी आर्टिकल 213 ना 123 213 बधे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे चेक कर दो ठीक अच्छे किसी भूल ओके
आर्टिकल 213 153 रु नहीं कि वर्तमान पर्यंत जेतिकी भी आर्टिकल मु कहि सबू इम्पोर्टेंट ओके पार्डनिंग पावर टा को आर्टिकल रे अछि आर्टिकल 161 रे गवर्नर पोजेस द पावर टू ग्रांट पार्डन्स माने क्षमा करि परिबे रिस्पाइट करि परिबे रिमिट करि परिबे जहां भी किछि पनिशमेंट अछि स्टेट लॉ अगेंस्ट जायकी ताकू से क्षमा भी करि परिबे हैला प्लस से जजेस मान सहित कंसल्ट करें मत गोटे कथा कह जदि जन को डेथ सेंटेंस मिली माने मृत्यु दंड मिली ताकू चाहिए गवर्नर आमर खारिज करें कि ना माने मृत्यु दंड को गवर्नर चाहिए माफ करें कि ना हाँ कि ना मत कह गोटे डेथ सेंटेंस जदि अच्छी ताकू गवर्नर चाहिए माफ करें कि ना भूल कहल डेथ सेंटेंस को माफ कर पारे कि नहीं तिथि इज सेइंग नो Pankaj is saying no. It depends upon president, not governor. Okay. तो जदि गोटे हार्श माने किछि सेमती तुमको पनिशमेंट मिली ताको रिलैक्स करि परिबे गवर्नर हैला मनकर 15 वर्षर सजा मिली ताको चाहिए से 10 वर्ष 5 वर्ष एमती करि परिबे बट ही कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस पूरा डेथ सेंटेंस को से खारिज करि परिबेनी सेही पावरटा ओनली प्रेसिडेंट पाखरे अछि ओके वेरी गुड से चाहिए गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट when appointing judges to the state high court रे जो judges मान को appoint करा जिवो सेटा भी गवर्नर को कंसल्टेशन रे ही करा जाय प्रेसिडेंट गवर्नर सहित कंसल्ट करिकी ही तमरो स्टेट हाई माने स्टेट कोर्ट हाई कोर्ट रो जजेस मान को अपॉइंट करंती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कथा जदी कहबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे जहां भी अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन हला सेटा भी तमरो गवर्नर को सहित डिस्कशन पर ही अपॉइंटमेंट करा जाय आउ कौन कौन फंक्शन रहा ये तीन मेजर फंक्शन आम पढ़लु एग्जीक्यूटिव फंक्शन लेजिस्लेटिव फंक्शन आउ जुडिशियल फंक्शन कौन कौन रोचे गवर्नर प्लस while the governor generally acts on the advice of the council of minister the constitution implies certain situations where they act at their own discretion hela jemti ki selection of chief minister when no single party has a clear majority in the state assembly say time re किए कहार डिस्क्रिप्शन था गवर्नर रो ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो इटे लिखिला गवर्नर जनरली एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट किछिटा जिंस रे तमरो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानकर भी किछिटा हाथ अछि जेमति कि डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने देखो जदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स माने तांकर कॉन्फिडेंस लूज कर दियंती हैला से टाइम रे reservation of bill deciding which bills should be sent to the president for oversight ए सब जिंस डायरेक्टली गवर्नर को पूरा हाथ रे रहिला माने ए सब जिंस पे गवर्नर को कंसल्ट करिया को पड़िबोनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मान को सहित बुझिलो तो जनरली बहुत सारे जिंस पे गवर्नर डिस्कस करंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बट ए तीनटा जिंस जदी हमें छाड़ दबा ए तीनटा रे डिस्क्रिशनरी पावर रही छे गवर्नर कर से कंसल्ट चाहिए करिवे न करने को चाहिए भी it's perfectly fine okay so this was all about governor and appointment by the way दी जन गवर्नर को ना तो कुह मते तमिलनाडु रे किए गवर्नर हेचंदी एंड वेस्ट बंगाल रे किए गवर्नर हेचंदी ओके ना कुह मते कमेंट ओके एबे आमे आसीबा वार
मु कहली वार रे जहाँ भी होची सब जिनस हम इम्पोर्टेंट नुह बट लोकेशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्टली हमें जिबा ईरान इजराइल रो वार होची। ईरान जानी थबो त माने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है सेठु ही आसीथिले ईरान ही आजिन्स माने आसीथिले एमती कुहा जाय सेठु ही आसीकी हमरो इंडस वैली सिविलाइजेशन ए सब जिनस स्टार्ट हेतिला। ऑब्वियसली हमरो डायरेक्टली नेबरिंग स्टेट न हेले भी पाकिस्तान मझरे पळे आछी इंडिया डिवाइड हैला परे बट ता पूर्व जदि हम देखिबा ईरान तो हमर नेबरिंग स्टेट ही थिला हैला। ईरान विषय टिके हम जानिबा प्रथमे तो ईरान ऑफिशियली Islamic Republic of Iran is a major West Asian country with a long civilizational history. सब तमे जानिथिबो civilization history विषय dating back to the ancient Persian Empire. Since the 1979 Islamic Revolution, it has functioned as Islamic Republic. हैला मोस्टली इस्लाम को जो मैंने फॉलो करंती से माने ही सेठी रिजाइड करंती। ओके कंबाइनिंग रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन विथ क्लेरिकल ऑथोरिटी where the supreme leader holds ultimate power. Okay, so West Bengal Dr. C.V. Anand Bose. Yes. Location जानिथिबो त माने मिडिल ईस्ट में कहू वेस्ट एशिया कहू strategically positioned between Central Asia, South Asia, Middle East, overlooking key maritime routes in the Persian Gulf. हैला ईरान रो कैपिटल कोन तेहरान ऑब्वियसली हमें जान। बॉर्डरिंग नेशंस ईरान रो कोन कोन रही छी अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की एंड इराक राइट। तो हियर इज द एग्जैक्ट मैप। ओके तुम एठी देखि परथबो ईरान रहिला एठी एटा हमरो इंडिया हैला। तो डिवीजन पूर्वरु पाकिस्तान जतबळे नथिला हमरो डायरेक्ट बाउंड्री शेयर होथुला ईरान सहित। तो सेति पय जे सिविलाइजेशन हमरो स्टार्ट हेतिला ईरान रो आसीथिबार मिडिल ईस्ट रो में आसीथिले बिले कहू ईरान रो सुदा आसीथिले हैला। तो हमें ताको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कहू। ओके नाउ ईरान रो कहली ईरान रो बाउंडिंग नेशंस गुडा के इंपोर्टेंट देखो ईरान रो बाउंडिंग नेशंस कोन सब अछि एपटे पाकिस्तान रहिला, अफगानिस्तान अछि, तुर्कमेनिस्तान अछि हैला, एपटे तमरो कैस्पियन सी रहिला, एपटे रहिला द गल्फ एंड एठी हला इराक, एठी हला सऊदी अरेबिया। ना सऊदी अरेबिया रो बाउंड्री तो हम कहि परिबानी हैला बिकॉज़ इराक एठी रहि जाउछ राइट। अदरवाइज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आउ ए सब तो रहि जबो माने तान 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 जोटा अछि हैला अजरबैजान, आर्मेनिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान ए सब इराक ए सब हमरो रहउछि। ओके तुर्की रो भी एठी बॉर्डर शेयर होछि तमे देखि परथो तुर्की भी बॉर्डर तार शेयर करूछि एठी तुर्कमेनिस्तान एपटे शेयर करूछि हैला। मैप स्टडी बहुत इंपोर्टेंट। ओके अच्छा इजराइल कोठी इजराइल हला छोटो माने छोटो जगहटे एठी हला तमरो इजराइल। ओके सीरिया रे जतबेले तमरो वार चली थिला माने जहा भी प्रॉब्लम चल थिला सेतबेले भी सीरिया रो लोकेशन ता हम इंपोर्टेंट थिला। एबी भी तमरो ईरान और इजराइल खास करी जेहेतु ईरान रो बॉर्डरिंग नेशंस बहुत माने अछि प्लस को सी इन्वॉल्व अछि कैस्पियन सी हला द गल्फ रेड सी कोठी अछि ए सब जिंस हम पय ठीक इंपोर्टेंट हे जाउछि। ओके ब्लैक सी कैस्पियन सी देखो ब्लैक सी कोठी अछि कैस्पियन सी कोठी अछि कैस्पियन सी जदि हमें देखिबा ईरान ऊपर अछि हैला एंड ईरान रो दीपटे जाक जो बाउंड्री नेशंस अछि ताको सेपरेट करूछि कैस्पियन सी। ओके क्लियर अच्छा सो कोस्ट लाइन जदि हमें देखिबा कैस्पियन सी तमे देखिलो दीपटे साइड तार बाउंडिंग नेशंस अछि आ एपटे मझरे कैस्पियन सी तळे रहिला तमरो पर्शियन गल्फ आउ गल्फ ऑफ ओमान। ओके तार हिस्ट्री विषय बेसी हमको जीवा दरकार नहीं। अच्छा को डेजर्ट तमे देखिया पाओ दस्ते कबीर आउ दस्ते लुत एटा हमें मन रखिबा दीटा मेजर डेजर्ट्स हमें सेठी देखिया पाओ। इट इज अ वेरी हाईली सिस्मिक रीजन माने अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली से जगह रे देखिया तुमको मिले। इंपोर्टेंट वाटर बॉडीज हमको मन रखिया पड़िबो लेक उर्मिया हैला और रिवर्स करुण रिवर आउ सेफिद रिवर हैला ईरान रे ए सब रिवर्स गुडा को अछि
लेक्स अच्छी लेक उर्मिया एटा मन रखिबो हला डायरेक्टली पचार दबा को लेक्स अच्छी को रिवर्स अच्छी ऑप्शंस दे दबो ओके अच्छा कैस्पियन सी पाखरे माउंट डमावंद बेले भी गोटे माउंटेन माने अच्छी तमरो अल्बोर्ड्स माउंटेन जोटा होची ईरान रो हाईएस्ट पीक व्हिच इज माउंट दमावंद ओके क्लियर एतिकी हमको जानियार अछि प्लस सबुठ इम्पोर्टेंट है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जोटा को एबे ईरान बंद कर दे रेस्ट्रिक्ट कर दे कंट्रोल्स एक्सेस नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस through which a major share of global oil trade passes माने जदि ग्लोबल ऑयल रो ट्रेड रो रास्ता हमें कहबा इट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ताको ही वर्तमान से बंद कर देछि जो थि पे कि तमे देखिथबो कि तमरो गैसेस रो प्राइस माने यू नो ऑयल रो प्राइस ऑयल आ मिली बनी ए सब रूमर गुडा तमे देखिया को मिलछि एंड सिलेंडर रो गैस रो प्राइस पे बढ़ी जाइछि ओके ईरान पाखरे भी बहुत माने वास्ट रिजर्व अछि तमरो ऑयल और नेचुरल गैस रो ओके अच्छा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो कहली इंपोर्टेंट हला तुमको हम कहली पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान ऊपर थिला हमर कैस्पियन सी एटी हला पर्शियन गल्फ एटी हला गल्फ ऑफ ओमान ओके दिस इज एंटायरली योर ईरान ओके ईरान सेपट तुम देखुथबो इराक इजराइल तो सेपटे रहिला ओके नाउ ए जो नैरो जोन टा देखुछ आको कहा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओके मन रखिबो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज अ नैरो बट स्ट्रेटेजिकली vital waterway that serves as the primary maritime passage for oil and gas exports from from the Persian Gulf to the global market है ना पर्शियन गल्फ रु पूरा समस्त को खास करके हमर इंडिया हो पाकिस्तान हो समस्त को एई रूट रो ही माने पर्शियन गल्फ रु हमर ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट हुए आ एटा हुए जेतबले ईरान बंद कर देछि देन ग्लोबल एटा इफेक्ट पकेबो राइट सेति पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का माने स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपोर्टेंट प्लस कोडी तमर लोकेशन एटा ईरान रो नॉर्थ रे एंड ओमान रो साउथ रे connects Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea, opening into the wider Indian Ocean. At its narrowest point, it is about 33 kilometer wide. माने तार सबुठो narrowest point is 33 kilometer wide अछि, with shipping lanes only about 3 kilometer wide in each direction. Okay? हिस्टोरिकली भी जदि हम देखबो एटा गोटे की ट्रेड रूट थिला जोरा कि एशिया मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करथला हैला एंड बहुत सारा तमर एठी पूर्वरु जो टेंशन्स देखा जायछि ता पई भी माने बारंबार ए जगह रे टेंशन्स तमरे देखा जायछि 1980 रो ईरान इराक वार हेथिला 2012 2019 रिसेंटली 2023 24 रे बहुत सारा सैंक्शन रिलेटेड तमरा प्रॉब्लम्स भी देखिया को मिलिथिला ए पर्टिकुलर रीजन रे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस रे जस्ट अ सेकंड
Sorry for the interruption. Okay, so are we clear? State of Hormuz ଟା ଆମର କୋଉଠି located exactly and এটা जो कहली lies between Iran माने Iran होची से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रे नॉर्थ रे लाई करे ईरान रो ऊपर हैला सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रो ऊपर रहिची ईरान आ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रो तळे अछि ओमान राइट बुझ परछो ओमान आ ईरान मझिरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज टा रहउची आ जेति कि भी तमरो मेजर ऑयल गैस रो ट्रेडिंग रूट होची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज तो एटा को जेते बळे बंद कर दिया जाउची देन ऑब्वियसली ग्लोबली ऑयल और गैस सप्लाई ऊपर इफेक्ट निहाती पड़िबो ओके हेलो सिलोचना देवी so it is a major energy corridor about 20% of the global oil supply माने 20% कम भाबनी 20% is huge okay 20% माने 20 million barrels per day कथा हम एटे कहूछु transits this particular route a route ru transit करे okay nearly all the Qatar's LNG export pass through this strait global choke point second busiest oil transit choke point होची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ओके प्रथम कोटा प्रथम हला स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर सेकंड बिजिएस्ट ऑयल ट्रांजिट रूट होची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ओके लिमिटेड अल्टरनेटिव्स व्हाइल सऊदी अरेबिया एंड यूएई हैव पार्शियल पाइपलाइन बाईपास ऑप्शन बाकी जितने की भी गल्फ एक्सपोर्ट समस्त ए रूट ऊपर ही डिपेंड करंती international waterway though within Iranian and Omanian territorial waters it is open to global navigation under international maritime law okay तो किछि भी डिसरप्शन जदि हमको ए पर्टिकुलर एरिया रे देखा जाउची देन ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड रे हमर ऑयल आउ गैस प्राइस रे इंपैक्ट देखिया को मिलिबो जोटा कि देखिया को मिलुची भी अफेक्टिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जदि तमे आज रो देखिबो न्यूज़ माने कौन कहलो स्टॉक मार्केट पाखापाखि 700 पॉइंट आज माइनस रे ओपन हेची हला जो माने भी टिके नॉलेज थिबो निफ्टी वगैरह हला 700 पॉइंट खसिची स्टॉक मार्केट माने इट इज ए माने बड़ क्रैश हम कहि परिबो एंड ऑब्वियसली रीजन इज दिस आ गोल्ड रे भी जो फ्लक्चुएशंस देखु छ गोल्ड रो प्राइस रे दैट थैंक्स टू द war okay acha presence of the US fifth fleet in Bahrain underscores its geopolitical value okay so this was all about Strait of Hormuz आउ Iran रो लोकेशन आमे स्टडी कर देलु सेटा हम पा इंपोर्टेंट अगेन मु तुमको कहूची ईरान रे जो भी लेक्स अछि लेक उर्मिया रिवर कारोन रिवर सेफिद मन रखिबो निहाती हला ए तीनटा माने वाटर बॉडीज इंपोर्टेंट ईरान रो प्लस ईरान रो बाउंडिंग नेशंस और बाउंड्री रे को कंट्रीज लाई करंती हला तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान ए पटे तीनटा तान हे गला ता छोड़ा तुर्की रो भी बाउंड्री शेयर होची एठी तुर्की रो भी बाउंड्री शेयर होची एंड सऊदी अरेबिया रो शेयर हो नहीं इराक तो अच्छी हला इराक तुर्की हला इराक तुर्की हे गला तापरे ए तीनटा तान आ अजरबैजान और आर्मेनिया ए ऊपर रोज अजरबैजान और आर्मेनिया भी शेयर करूची बाउंड्री ईरान सहित ओके एती जिंस हमें निहाती मन रखिबा प्लस माउंटेन कोन माउंट दमावंद होची ईरान रो हाईएस्ट पीक जोटा कि कैस्पियन सी पाखरे लोकेटेड कैस्पियन सी मन रखिबो आ गल्फ हला गल्फ पर्शियन गल्फ आउ गल्फ ऑफ ओमान ए मझिरे हमर रहिला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एटा हला कैस्पियन सी ऊपर रहउची कैस्पियन सी तळे रहउची गल्फ क्लियर एम आई क्लियर हो कि नहीं बुझा पड़छ कि नहीं तो मैप स्टडी बहुत इंपोर्टेंट जब तक खाली युद्ध विषय न्यूज देखिबो जदी युद्ध चली छी
डायरेक्टली तमे माने जहाँ भी तुम ऑक्सफोर्ड रो मैप बही अच्छी जहाँ भी वर्ल्ड मैप रो अच्छी जाओ प्रॉपर्ली स्टडी करो कौन कौन सब अच्छी से जगह है ओमान कोठी अच्छी नाउ स्टेट ऑफ हॉर्मस रो तले जदि आमे देखिबा यूएई इथि अछि यूएई ऊपर भी अटैक्स हिची ओमान एठी रहउची ईरान एठी रहिची ए सब जिंस गुडा को इंपोर्टेंट हे जाउची ओके तो जदि तुम मैंने खाली टेस्ट सीरीज में भी जॉइन हवा को चाहो प्रिलिम्स हबार अच्छी बहुत जल्दी देखो देखो मार्च हो गला मार्च सरी भी जीव एप्रिल मे जून जून रे प्रिलिम्स माने रहिला 3 मास हला तो जेतिके भी हमें मार्क्स दबा टेस्ट दबा तेबे ही हमें हमर से कॉन्फिडेंस टा बूस्ट अप हे परिबो कि नहीं हमर प्रिलिम्स क्रैक हबो जदि प्रिलिम्स ही क्रैक हे परिबनी ए सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड तम पे किछि काम को न हला प्रिलिम्स क्रैक करियार अछि बाय द वे जो माने अप्लाई करिनो डेट एक्सटेंड हेछि 12th मार्च पर्यंत डेट एक्सटेंड करा जाइछि सिविल सर्विस एप्लिकेशन रो काइंडली जो माने भी करिना अप्लाई कर दिए जल्दी एंड जदि तुम एनरोल करिया को चाहो टेस्ट सीरीज पे टोटल 36 टा जीएस और सीसैट रो टेस्ट मिसे की टेस्ट सीरीज अछि ओके एंड 1-to-1 मेंटरशिप रहिबो रिवीजन क्लासेस रहिबो पीवाईक्यू डिस्कशन रहिबो क्वेश्चन टा इंग्लिश रे रहिबो ओडिया रे रहिबो हैला 10 टा फुल लेंथ टेक्स्ट तुमको एठी मिलुची और 26 टा फंडामेंटल टेस्ट मिलुची क्लियर तो जदि किछि भी माने तुमको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दरकार ए नंबर रे कांटेक्ट कर परिया नेक्स्ट जिबा 16th फाइनेंस कमीशन विषय गोटे आर्टिकल आस्थिला मिसेस एंड कंसर्न्स हैला कोन कोन हिट अछि कोन कोन फ्लॉप अछि कोन कोन मिस कर दिया जाइछि ये पढ़ी छो आर्टिकल बाय द वे मत को कथा को चेयरमैन किए 16th फाइनेंस कमीशन रो चेयरमैन किए अपॉइंट हेचंती को कमेंट रे 16th फाइनेंस कमीशन रो चेयरमैन किए ए आर्टिकल टा जे लिखचंती दिस इज नॉट डिफेंस टेक्नोलॉजी सॉरी ए आर्टिकल टा जे लिखिचंती सी रंगराजन से होचंती आरबीआई रो फॉर्मर गवर्नर प्लस 12th फाइनेंस कमीशन रो चेयरमैन थिले हला डीके श्रीवास्तव इज आल्सो ए चीफ पॉलिसी एडवाइजर ए फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमी और 12th फाइनेंस कमीशन रो मेंबर थिले सी रंगराजन 12th फाइनेंस कमीशन रो चेयरमैन थिले ये मेंबर थिले से जदी ए आर्टिकल लिखिचंती निहाती एटा इंपोर्टेंट हे जाउची राइट जल्दी कहो 16th फाइनेंस कमीशन रो चेयरमैन किए आंसर आसुनी कोन पे 16th फाइनेंस कमीशन रो चेयरमैन किए डॉक्टर अरविंद पानागरनिया देखो एटा इंपोर्टेंट 16th फाइनेंस कमीशन रो चेयरमैन होचंती वर्तमान श्री अरविंद पानागरिया से थिले नीति आयोग रो फॉर्मर वाइस चेयरमैन ओके ता छडा मेंबर्स के अछंती अजय नारायण झा एनी जॉर्ज मैथ्यू निरंजन राजाध्यक्ष एंड सौम्यकांति घोष ओके तो जदि तमे देखिबो फुल टाइम मेंबर केते जण फुल टाइम मेंबर 3 जण अछंती हला अजय नारायण झा एनी जॉर्ज मैथ्यू निरंजन राजाध्यक्ष एवन होचंती फुल टाइम मेंबर सौम्यकांति घोष से होचंती पार्ट टाइम मेंबर ओके सो दैट मींस तमरो एठी गोटे चेयरमैन रुहंती हला ता बाद तीनटा तमरो फुल टाइम मेंबर्स अछंती आ जने पार्ट टाइम मेंबर अछंती को आर्टिकल निहाती मन रखियार अछि हमको आर्टिकल 280 अंडर रे लिखाई छी कि फाइनेंस कमीशन गोटे रहबा दरकार फाइनेंशियल और फाइनेंस कमीशन होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अछि माने ऑब्वियसली गोटे आर्टिकल थिबो तो आर्टिकल 280 रे लिखा है छी फाइनेंस कमीशन विषय रे
Okay, Finance Commission is a constitutional body under Article 280 that recommends the distribution of tax revenues. Okay, main काम कौन रिसोर्सेस को बढ़िया भाव में एलोकेट करबा हैला कोठू केते पैसा आसुची कोठी कोडा जाउची केतिकी टैक्स दिया होची केतिकी बजट एलोकेशन होची केमिति हमें रिसोर्सेस टाको ऑप्टिमाइज करि परिबा हैला रिसोर्सेस इन द सेंस पैसा हैला केमिति पैसा रो कारोबार होची ए सब जिंसटा हमर देखिबो फाइनेंस कमिशन यस ओके अच्छा कौन आम देखुलु मेजरली सो बेसिकली एवरी 5 इयर्स रे एटा को कॉन्स्टिट्यूट करा जाय हैला 5 वर्ष तळे थिला हमरो 15th फाइनेंस कमिशन दिस इज द 16th फाइनेंस कमिशन इन 2026 it is a constitutional body under article 280 that strengthens India's fiscal federalism माने पैसा केमिति स्टेट को जीवो सेंटर रो केमिति पैसा आसी स्टेट को केमिति पैसा जीवो को जगह रे जीवो केतिकी एक्सपेंडिचर होची केतिकी खर्च होची केतिकी आमदनी होची केतिकी खर्च ए सब जिंसर हिसाब किताब रखिबो फाइनेंस कमिशन ओके constituted every 5 years it recommends tax devolution grants fiscal reforms to address vertical and horizontal imbalances जहाँ भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल imbalances रही ताकू से एड्रेस करिबो बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स सो मेजरली जदि हमें देखिबा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रु स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा आसुची कौन से माने इज एवरीथिंग ओके कि किछि लाकुना रहूची ए सब जिंस को से निहाती जज करिबो ओके एंड ऑब्वियसली जेतु कहली आर्टिकल 280 रे अछि सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिटी commission that ensures fiscal federalism in India. It is constituted by the president every 5 years. हैला president द्वारा एटा constitute करा जाय प्रति 5 वर्ष. ओके गोटे चेयरमैन थांती चारिटा मेंबर थांती चारिटा मेंबर थांती फाइनेंस बैकग्राउंड रो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रो किंबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड रो रही परिबे कोर फंक्शन रेकमेंड करिबे शेयरिंग ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स between the union and states okay को टैक्स कवर अप करंती इनकम टैक्स जीएसटी आ जति की भी सेंट्रल टैक्स अछि all these taxes are examined by the finance commission of India okay interstate distribution finance commission decides the criteria for distribution among the states horizontal devolution मु कहली ना horizontal devolution माने interstate हैला इंट्रास्टेट इठी मु कहूनी इंटरस्टेट गोटे स्टेट रो आउट स्टेट को भी जो पैसा कारबार होची ए सब जिंस विषय देखिबो एंड जहां भी ग्रांट्स मिलुची द फाइनेंस कमिशन रिकमेंड्स ग्रांट्स टू रेवेन्यू डेफिशिएंट स्टेट अंडर आर्टिकल 275 तो जति के भी रेवेन्यू डेफिशिएंट स्टेट अछंदी तांको से ग्रांट भी रिकमेंड करे लोकल बॉडीज फाइनेंस कमिशन सजेस्ट मेजर टू strengthen the finance of panchayat and municipality ओके ए सब काम हैला कोर फंक्शन हैला तमरा फाइनेंस कमिशन रो ओके इट एडवाइजेस ऑन एक्सपेंडिचर कंट्रोल जहां भी तमरो ऋण जहां अछि केमिति तमरो खर्च होची के कोन कोन तमको रिफॉर्म आने को पड़िबो हैला ए सब जिंसो से देखे एडवाइजरी रोल फाइनेंस कमिशन एग्जामाइन्स फाइनेंशियल मैटर्स रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट सिग्निफिकेंस कोन it is the key commission ensuring equitable resource distribution and cooperative federalism in India तो जतो हम खाली फेडरलिज्म कथा कहूजो एमदी नो कि यू नो सेंटर रो पावर स्टेट रो पावर खाली सेतिक लिमिटेड रह जाउची पैसा कारोबार भी देखिया को पड़िबो तो सेंटर रो स्टेट को जो पैसा आसुची स्टेट गोटे स्टेट रो आउट स्टेट को जदी भी किछि पैसा जाउची से पैसा गुडा को जाउची कुआडे ठीक काम रे लागुची कि नै ए सब जिंस से देखिबो ओके एंड ऑब्वियसली किछरा रिफॉर्म्स किछरा एडवाइसेस से दबो एटा करो सेटा करो एमति करिया कथा सेमति करिया कथा ओके सो मेंबर्स गुडा हम देखिलु टोटल चारिटा मेंबर हैला 1 2 3 4 चारिटा मेंबर अछंती
तीनटा से भितर फुल टाइम जड़े पार्ट टाइम ओके एंड गोटे चेयरमैन श्री अरविंद पानगरिया ओके अच्छा आर्टिकल कौन आर्टिकल 280 है को पार्ट रे अछि सेटा पार्ट 12 है प्रति 5 वर्ष रे प्रेसिडेंट आपको कॉन्स्टिट्यूट करंती चेयरमैन जने रुहंती चेयरमैन सहित 4 जण मेंबर रुहंती ओके अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट जो 4 जण मेंबर थांती तांको हमें चाहिए रीअपॉइंट करि परिबा कि यस ताको हमें चाहिए रीअपॉइंट भी करि परिबा टेन्यूर कोन रहिबो प्रेसिडेंट जहा कहबे हैला प्रेसिडेंट जहाँ टेन्यूर कहे से हिसाब रे टेन्यूर डिसाइड हम एटा तो देखा जाउनी छोटो देखा जाउछ ना कोन प्रथम फाइनेंशियल कमिशन रो चेयरमैन थिले केसी नियोगी हैला आ पूर्व जो फाइनेंशियल कमिशन थिला 15th फाइनेंशियल कमिशन रो चेयरमैन थिले एनके सिंह एंड वर्तमान अरविंद पानागरिया स्टेट फाइनेंशियल कमिशन में गोटे सेटअप हुए ता विषय रे तमरो लिखा है आर्टिकल 243 रे एटा तमे मन रखिबो आर्टिकल 280 रे तमरो सेंट्रल फाइनेंस कमिशन जोटा रहउची हैला आ आर्टिकल 243 रे तमरो स्टेट फाइनेंशियल कमिशन रहउची आकु के कॉन्स्टिट्यूट करंती गवर्नर गवर्नर तो ये कौन करंती मेजरली तमरो पंचायत आ म्युनिसिपैलिटी रो फाइनेंशियल पोजीशन टाको रिव्यू करंती ओके तो ए जो आर्टिकल टा थिला बेसिकली इट वाज कौन हिट आ मिस रही माने फाइनेंशियल कमिशन 16th फाइनेंशियल कमिशन रो मिसेस कौन रही जाइछि कौन से माने मिस कर देछंती कौन कंसर्न हमको देखिया को पड़िबो चला स्टैग्नेशन इन वर्टिकल डेवोल्यूशन मु कहली गोटे वर्टिकल डेवोल्यूशन हबार अछि आ गोटे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन अछि वर्टिकल डेवोल्यूशन माने स्टेट सेंटर रो स्टेट को कौन सब आछि 16th Financial Commission has retained states' share in central taxes at 41%, despite states demanding an increase to 50%. है ना? Central taxes जहाँ थिला 41% सेतिकी रखा जायछि चेंज करा जायनि जेबे कि स्टेट माने डिमांड करथिले कि 50% रखिया कथा ए जिंसटा 16th Financial Commission रे हेई पारेनि This is seen as inadequate given expanding state responsibility in health. माने state रो अधिक responsibility रही जाउची health ता welfare रे education रे भी आउ GST reduce हला परे भी state ऊपरे तमरो responsibility अधिक पड़ी जाउची. The continued heavy use of cesses and surcharges which lie outside the divisible pool further shrinks states' unified फिजिकल स्पेस एंड वर्सन्स वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस है ना तो ये जो जिनसटा कांस्टेंट रखा गला सेंट्रल टैक्स रो शेयर टाको 41% रखा गला ए जिनसटा स्टेट पय प्रॉब्लम हो हे पारे ओके चेंजेस इन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन reduced weight for income distance weakens equity while higher weight for population and a new 10% weight for contribution to GDP favors populous and industrialized states. एटा तमरो बेसिकली इकोनॉमिक्स तमे जोठो बने जे पढौ थिबे से ही तुमको बेटर बुझे परिबे आई थिंक मु जा भाबुची है ना बिकॉज़ ए सब टर्म्स गुडा को एते इजी नुह बुझिबार राइट आमे खाली मेजरली कोन इश्यूज सेति कि आमे देखि परिबा अच्छा गोटे मेजर जिंस जहा आमे एठी बुझि परछु रिसेंटली गोटे तुम न्यूज देखि आंध्र प्रदेश कौन कला कि जदि जने 3टा छुआ जन्म करछन्ती गोटे पेरेंट हैला देन तांको इंसेंटिव प्रोवाइड करा जिवो हैला बिकॉज़ आंध्र प्रदेश रे भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स देखा गलानी पॉपुलेशन प्रॉब्लम देखा गलानी सेति पे से माने यू नो रिवार्ड देबे कहछन्ती इंसेंटिव प्रोवाइड करियो जो माने 3टा छुआ करन्ती ए सब जिंस पाई तुमको आउ माने कौन कहलो सेंटर रो आउ किसी कंट्रीब्यूशन मिलिबो नहीं जेमति कि हम कहली हायर वेट फॉर पॉपुलेशन एंड न्यू 10% वेट फॉर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैला तो ए सब साउदर्न स्टेट्स गुडा को जो माने रहउछंती कंटेंट द फिजिकल डेवोल्यूशन नाउ डिसएडवांटेजेस द डिस्पाइट
successful population control, while poor states fear tighter transfers will hinder development. है ना? तो जोटा कि वर्तमान ए जो एग्जांपल आमे देखिलु एमती बहुत सारा सदर्न स्टेट्स माने चाहंती कि तांकर जहाँ भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो पॉपुलेशन डिक्रीज देखा मिलुचे सेटा कंट्रोल करया पे से माने इंसेंटिव्स अनाउंस कर दोछंदी बट स्टेट गवर्नमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट कहूची कि आमे सेटा पे आमे तुमको आ पैसा दे परिबोनी ए सब जिंस टिके चलीची एमती बहुत सारा प्रॉब्लम्स अछि 16th Financial Commission flags the risk of aging before becoming rich. है ता माने again से जिंस जो southern states माने early investment in fertility reduction are no longer adequately recognized, undermining the principle of cooperative federalism. है के aging before becoming rich माने rich हवा पूर्वरु तम बुढ़ाई जीव है ए जिनसटा को माने से प्रॉब्लम हो जाउछ बुझि पालो ओके तो एमदी बहुत इकोनॉमिक टर्म्स गुडा को अछि इकोनॉमिक जे माने पढि नथिबो ए सब जिंस बुझियाटा टिके माने कष्ट होई जीवन यार अच्छा तो बेसिकली जदि हमें देखिबा जो 16th फाइनेंशियल कमीशन आसिला transitions India toward a compliance-driven fiscal model, prioritizing economic contribution and forest ecology. It enforces strict fiscal discipline at the expense of the state level autonomy. State को से mostly responsibility वर्तमान दे देजी main majorly हमें सेटा बुझिलु. Ultimately, its success depends on balancing rewards for performing states. जो state माने भलो परफॉर्म करेबे तांको रिवार्ड दिया जिवो आउ तांको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जिवो हला बस एती जिंस आमे बुझि पारु क्लियर इंटरस्टेट काउंसिल एटा तो तमे जानथिबो आर्टिकल 263 हला तारो फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हबा कथा जदि आमे देखिबा ए सब जिंस देखिया पे सो दैट आमे रियल टाइम फेडरलिज्म को अलाउ करि परिबा ग्रांट डिले जदि किछि होची कि 10 दिन भीतर गोटे ग्रांट को अप्रूव कर दबा कथा बट जदि होनी देन से केस से तमरो इंटरस्टेट काउंसिल रो मीटिंग्स फ्रीक्वेंटली बसबा कथा सो पीडीएफ टा मिलला पर से आर्टिकल टा काइंडली पढि दबो जहां भी सब जिंस लिखा हिची पढिबो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि 16th फाइनेंस कमीशन मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम एंटाइटलमेंट बेस्ड टू कंप्लायंस ड्रिवन फिस्कल फेडरलिज्म क्रिटिकली एग्जामिन माने तार पॉजिटिव नेगेटिव सब तुमको इटे एग्जामिन करिया को पड़िबो द इम्प्लिकेशंस ऑफ दिस शिफ्ट फ्रॉम फॉर सेंटर स्टेट रिलेशंस हला तो इंटरस्टेट काउंसिल विषय लिखिया को पड़िबो एंड ऑब्वियसली फाइनेंस कमीशन विषय तुमको टिके इंट्रोडक्शन में लिखिया को पड़िबो ए सब जिंस ट्राई करो सम अप करे कि ओटे केमती आंसर फॉर्म रे हमें लिखि परिबो ओके नेक्स्ट अच्छा जदि तम माने ओडिया ऑप्शनल तम मन कर अछि ओडिया ऑप्शनल पाई भी स्पेशल बैच हमर अछि हैला डॉक्टर बीके साहू ताको नियंती ही हैज अराउंड 26 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जदि तमे जॉइन हबा को चाहू छ देन गिवन नंबर रे तमे कांटेक्ट करि कि जॉइन हे परिबो प्लस होम साइंस ऑप्शनल भी अछि आ सर तो नियंती पीएसआईआर ऑप्शनल सेतरे भी जदि तमरो ऑप्शनल अछि यू कैन जॉइन बाय कांटेक्टिंग द गिवन नंबर अच्छा ए दी जन को ना कोन मत कहि परिबो कि ए दी जन को इमेज मु तुमको देखैली इफ यू आर अपडेटेड विथ द करंट अफेयर्स तमने जानि थिबे मान कर ना ए दी जन को ना कोन को के कहबो ए दी जन को ना को जानि छ जानि के
जाननो अरे नो नो तो एटलिस्ट को देन मैं आगो बढ़ेबी यदि जाननो तो किसी असुविधा नु यस और नो जानी छ ना जाननो सेंसस हबार अछि एटा तो जानथिबो सेंसस 2027 सेंसस 2027 रो दी जण मैस्कट होउछंती ये हैला ए दी जण होउछंती मैस्कट ऑफ सेंसस 2027 तांकर ना कोन ना मन रखि हमें जो फीमेल अछंती तांको ना हला प्रगति आ जे मेल अछि ता ना हला विकास हैला तो विकास एंड प्रगति प्रगति एंड विकास ये होछंती टू ऑफिशियल मैस्कॉट्स ऑफ सेंसस 2027 okay so Amit Shah recently unveiled the official mascots Pragati and Vikas for census 2027 alongside the launch of several digital platforms to support India's first fully digital census exercise. Okay. So जो प्रगति और विकास अछंती they will act as the public outreach symbols helping disseminate information about the census in a citizen friendly manner represent equality चाहिए गोटे वुमेन को रखी पारथांते किंबा मेन को रखी पारथांते बट गोटे वुमेन भी अछंते गोटे मेन भी अछंते आउ जदि हमें देखिबा भी सेंसस रे एमती नो कि खाली मेन माने जायकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनते हमर फीमेल माने आसंते मेन माने भी आसंते तो जेंडर माने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किछि न हो सेति में दीटा मैस्कट रखा गला गोटे फीमेल आ गोटे मेल they symbolize the equal participation of women and men in nation building aligning with the vision of transforming India into a developed nation by 2047 objective kono it is designed as friendly public ambassadors they aim to make the census exercise more relatable and citizen centric okay so India ro prathamo fully digital census haba ko jauchi jo amar upcoming census achi first digital census in India's history. Data collection will be carried out using secure mobile application and digital platforms instead of traditional paper-based method. तो आगर जो paper-based methods रे होथला, हैला paper-based method रे जो हमरो सर्वे होथला, वर्तमान ये सब जिनसा हमरो fully digital हवा को जाउची. Okay, तो इंडिया रो प्रथम fully digital census is going to be census 2027 जहाँ की official mascots announce करछन्ती अमित शाह प्रगति and विकास okay caste enumeration भी हबो ई सब जिनस हम ऑलरेडी पढिछु 1931 परे प्रथम थर पई तमरो caste enumeration भी हबा को जाउची सब कम्युनिटी रो बस अच्छा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ओके खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स स्टार्ट हबो एबे मार्च रे स्टार्ट हबो छत्तीसगढ़ रे हबा को जाउची ओके ट्राइबल गेम्स खेलो इंडिया अलगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कथा हम कहूची so recently the union minister for youth affairs and sport announced that inaugural audition of the Khelo India tribal games it is a part of the Khelo India scheme the games will feature 7 medal sports हैला तो ए जो पर्टिकुलर गेम कौन कौन रहउची एथलेटिक्स रहइबो फुटबॉल रहइबो हॉकी रहइबो वेट लिफ्टिंग आर्चरी स्विमिंग और रेसलिंग ए सातटा स्पोर्ट्स इंक्लूड करा जायछि there will be 2 demonstration sports okay मल्लखंब and कबड्डी भी रहउची okay host के करूची obviously छत्तीसगढ़ रे होची छत्तीसगढ़ host करूची becoming the first state to host this landmark national events now प्रथम टाइम माने फर्स्ट टाइम में तमरा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होची हला आगुर हे नथला दिस इज द फर्स्ट एडिशन ओके सो प्रथम थर पे होची सो प्रथम थर पे छत्तीसगढ़ आको होस्ट करूची एंड Khelo India Tribal Games will see representation from most states and union territories of India.
It will be jointly managed by Ministry of Youth Affairs and Sports, Sports Authority of India, Indian Olympic Association, National Sports Federation, and Chhattisgarh State Organization Committee. ये सब एतिकी committees, एतिकी association jointly a particular Khelo India tribal games को manage करेंगे. ओके आर भी गोटे मैस्कट अच्छी जमी सेंसस आम मैस्कट देखिलु खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स मैस्कट ना है मोर वीर कौन मोर वीर ओके डिराइव्ड फ्रॉम टू पावरफुल वर्ड्स मोर मीनिंग मोर माने ट्राइबल भाषा रे आ ओडिया भाषा रे भी मोर मोर माने माइन मोर मीनिंग माइन और आवर ओन इन छत्तीसगढ़ी एंड वीर मीन्स obviously वीर है करेज एंड वेलर ओके तो से आम इंस्पायर है कि मैस्कट ना दि जाइए मोर वीर ओके मोर वीर वीर अच्छा सो इट इज ए फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम एटा को प्रकार स्कीम खेलो इंडिया स्कीम कथा जदि हमें देखिबा सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड इट इज एम्ड एट promoting mass participation and sporting excellence. Recently kali India amaro T20 World Cup भी जीती छी तो आमे obviously माने sports को जीती कि आमे दबा कथा ताठो अधिका दोछु and तार results भी आमे देखिया को पाउछु okay consecutively दीटा amaro India जीती छी and even women रो World Cup भी India जीती छी okay so Khelo India Games have been declared event of national importance in 2020 under the Sports Broadcasting Signals Act 2007. Okay, so this was all about today's class. जहाँ भी important जिनस थिला हमें कवर अप कलु मेजरली जेहेतु युद्ध चलुची न्यूज बेसी किछि नै बट जहाँ भी थिला मु तुमको कहि देली आ युद्ध पई भी हमर जहाँ भी लोकेशन स्टडी करियर थिला से जिनस भी हमें स्टडी कलु ओके तथापि कार किसी डाउट अच्छी मतलब वर्तमान पचार करियो इस डाउट नहीं किसी डाउट नहीं जदि विल एंड द क्लास मोर वीर कहार मैस्कट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स रो विकास कहार मैस्कट सेंसस 2027 रो प्रगति कहार मैस्कट सेंसस 2027 रो ओके आ कोन ईरान रो इराक रो इजराइल रो मैप आमे देखिलु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आमे देखिलु ओके सिस्टम फाइनेंस कमीशन विषय में पढ़िलु गवर्नर विषय में पढ़िलु ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास आई होप यू लाइक द क्लास देखा हबा नेक्स्ट क्लास रे टिल देन पढु था कोन टिल देन आ कोन करिवो ओके थैंक यू